Guys, hello friends, welcome back to my channel guys. KSE e-learning platform, GSE learning platform, where we discuss also about the topics or entire subjects which is concerned to the competitive exams. And a part of this, I always come with a new and different topic which really helps you to improve your digital or technical knowledge. So here guys, in this video I will show you how to remove administrator password or user password without opening your system. इस बिना सिस्टम को ओपन किए हुए you can use this DVD or CD. You can break and you can change the administrator password or user password. This is called a third party tool, WinLive Boot CD. So I am going to break the administrator or user password using Live Boot CD. So I have a pirated copy of Live Boot CD. Now I will insert it into my system. So I have inserted my CD into my system, and now I am going to reboot my system and I will boot from CD drive. Okay, so now let's have a look. So guys, I am going to boot again, restart my system, and I will boot through my CD. Okay, I am booting through CD. So restart and press F9. F10 भी लेता है F10 delete button in different PC you will be asked in different way. So I am booting from CD. Power on password. So see, now I am booting from CD. It will ask to boot from CD, press any key. So you just hit any key. F9 दबाने के बाद आपसे पूछेगा कि आप CD से बूट होना चाहते हैं, तो एंटर दबा देना है या कोई भी की को प्रेस करना है, and it will start booting from CD. Now it is loading window file. It will take some time. So now it will come. Window is starting. See, don't do anything. See, now the desktop has come. You can see this kind of desktop will appear on your screen. You can see Live Boot 2012. This is the pirated version of Live Boot that I have copied from somewhere else. So through this I have booted and the system now has come in Live Boot. इस तरीके से आपको डेस्कटॉप दिखाई देगा Live Boot का. आपको बहुत सारे यहाँ पे आइकन्स मिलेंगे जिसका आप यूटिलाइज करेंगे. सो नाउ आई एम गोइंग टू नाउ रिमूव द पासवर्ड ऑफ यूजर एडमिनिस्ट्रेटर. यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा वंडर शेयर लाइव बूट. ओके, यू विल सी द ऑप्शन वंडर शेयर आइकन. डबल क्लिक ऑन इट and this wizard will come on your desktop. ये विजार्ड यहाँ से वन बाय वन काफ़ी सारे ऑप्शन हैं. यू कैन यूटिलाइज मोर ऑप्शन हेयर लाइक विंडो रिकवरी. इफ़ यू वांट टू रिकवर योर विंडो यू कैन डू इट फ्रॉम हियर. इफ़ यू वांट टू रिकवर योर डेटा, you want to do any partition your hard disk, any like deletion of hard disk and creation of new partition, so you can do everything from here. I am going to change our password. See the last option, password and key finder. You can also check it from here, view detail. So click over view detail. Okay, click over view detail. You can see admin password resetter. Okay, admin password resetter. So this option admin password resetter, click on admin password resetter. See the system is window 10 system था जो इंस्टॉल किया हुआ है. And now drop it down here. See this which आप कौन किसका पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं. जो भी यूजर और एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो टोटल यहाँ पे शो करना शुरू कर देगा. टोटल यहाँ पे शो करना शुरू कर देगा. यदि आप एडमिन का पासवर्ड रीसेट करना चाहते हैं तो एडमिन सेलेक्ट कर लीजिए. यदि आप यूज़र का रीसेट करना चाहते हैं यूज़र सेलेक्ट कर लीजिए. जिसको भी आपको चेंज करना है, जिसका भी सिस्टम का पासवर्ड आपको हटाना है. सपोज इफ़ यू वांट टू remove the admin password, select admin user. If you want to remove user password, select user. So I am going to remove administrator password from here. I have selected other user like NS. Click on, just click, simple click reset and say it will ask, are you really sure to remove your password? Yes, I am sure. Click on OK.
Are you sure to reset the password? Yes. If you want to reset, if you want to remove, just click no. If you want to reset, click yes. Say password is reset successfully. मीन्स आपने पासवर्ड को सक्सेसफुली यहाँ से रिमूव कर दिया है. विंडो पासवर्ड अभी आपका एडमिन पासवर्ड हट गया. ओके, सिंपल प्रोसेस. So you have successfully removed your admin password. If you want to remove the user password, the process is same. You have to drop down and select another user, and you can remove the user password also. If you want, there is also some many options, like if you want to find your window key, select window key and click on window key finder. See, it will start showing this is the product key of your window and the product ID of your window, and this is the window that you are using right now. So this was the simple way to remove your administrator password or user password with the help of live boot CD. Okay guys, now if you want to check it, close and restart the system and boot from your hard disk. Okay, so I'm going to reboot my system. See, now I have removed my CD and I have booted my system through my hard disk. Okay, अभी मैंने हार्ड डिस्क से अपने ओरिजिनल हार्ड डिस्क जो सिस्टम में लगा हो वहाँ से बूट किया, नॉर्मल बूट किया. नाउ आई एम चेकिंग. सी NSC का मैंने पासवर्ड रिमूव किया था और आप देख सकते हैं बिना किसी पासवर्ड के ये एडमिनिस्ट्रेटर आसानी से खुल गया, यूजर आसानी से खुल गया. मीन्स सी यू हैव सक्सेसफुली रिमूव्ड योर administrator password with the help of live CD. Okay guys, so I hope you have understand the entire process. स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया कैसे आप एडमिनिस्ट्रेटर और यूजर पासवर्ड को लाइव बूट CD के माध्यम से कर सकते हैं. Okay guys, please subscribe my channel and share, and if you have any doubt, write down